Assalamu alaikum dear students. Let us revise clauses and phrases and its types: adjectival, adverbial and nominal clauses and phrases. What was clause and what was phrase and what is its difference? Let's see. A clause is a group of words that has as a subject and a predicate. Clause is a group of words that has a subject and a predicate. So, a clause is that kind of a group of words that in which we have subject and predicate. A phrase does not. A phrase is a group of words that lacks either a subject or predicate. So, phrase is without subject and predicate, while clause is having the subject and predicate. What is adjective clause? Adjective clause modify nouns or pronouns. So it gives us more information about nouns and pronouns. Adjective clauses tend to begin with or these are implied: who, whom, whose, which or that, when, where, why. So adjective clauses start with who, whom, whose, which or that, when, where, why. To test for adjective clause, they usually answer these questions: which one, what kind. So if we are going to test whether it's a adjective clause or adverbial clause, so we will see that whether they answer these questions: which one and what kind, because they tend to begin with these relative pronouns or adverbs. They are usually dependent clauses. And another thing is that they are a relative pronouns. For example, who, whom, whose, which, they are relative pronouns or adverbs, and they are usually dependent clauses. So we can say that these words and these words are relative pronouns, and the sentence which is formed by these words will be dependent clause. Where is the adjective clause? Let us see the example. The dog that sat in the swing wanted to be pushed. So here that sat in the swing. So what kind of dog, and what was his specialty? That dog was sitting on the swing, and that dog wanted to be pushed. So that sat in the swing is adjective clause, which giving us more information about the dog, which is a noun. Okay, let's see another example. The curly labradoodle, whose big brown eyes pleaded for a push, waited patiently. So here we can see where is adjective clause? Whose big brown eyes. Whose big brown eyes. So the clue which we are having in adjective clause is that the use of whose, that the use of that. Let's see another example. The man who put the dog in the swing should be punished. So here we have the adjective clause who put the dog in the swing. So relative clause, this is the relative pronoun. Who is the relative pronoun here? And adjective clause is who put the dog in the swing. Let's see adjective phrase. Adjective phrase modify nouns or pronouns. Like adjective clause, adjective phrase also gives us more information about noun or pronouns. Modify the same things the same way. The same things the same way. What does it mean? That it also gives us more information in the same way, but rather than using a clause, use a group of words. So without using a clause, without using a subject or a predicate, we can use group of words, a phrase. Like a nominal adjective, an adjective phrase can be used before the noun it is modifying, like in the first two examples above, or after the noun it is modifying, like in the last example. So like a nominal adjective, so we can use it before and we can use it after the noun. So both way we can use it. Where is the adjective phrase? Let's see. The dog in the swing wanted to be pushed. So in the swing, this is adjective phrase. Where is dog? What is it doing? And which type of dog is that? The dog is in the swing. It is sitting on the swing. So here this is adjective phrase. In the swing, preposition and noun. There is no subject here.
Let's see another example. The curly labradoodle with big brown eyes waited patiently. So with big brown eyes, which type of curly labradoodle was? And what was its specialty? It was having big brown eyes. So with is preposition, big brown eyes is adjective. So it is adjective phrase, group of words. That's why we can say that it is adjective phrase. Let's see another example. The man who put the dog in the swing should be punished. Okay, who put the dog? Here we can also say that it is adjective phrase. Adverbial clause. Let us discuss it. Adverbial clause contains a subject and a verb. It modifies verbs. Answer these three questions: how, why, when, and where. Tend to start with subordinating conjunctions, so they are usually dependent. As they start with subordinating conjunctions, so they are usually dependent. So adverbial clause give us more information about the verb and answer three questions: how, why, they, when, where, and they are also used as subordinated conjunctions, and they are dependent clauses. So let's see the example. Where is independent adverbial clause? With his arms at his side, the alligator breathed like a dolphin. With his arms at his side, एलिग्रेटेड ब्रीच लाइक अ डॉल्फिन. तो क्या हम कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि एलिगेटर ने एक डॉल्फिन की तरह चीख लगाई अपने दोनों बाजुओं को साइड पर रख कर. तो चीख उसने किस तरह लगाई? वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन में मिल रही है कि विद हिज आर्म्स एट हिज साइड, कि उसने अपने आर्म्स को साइड पे रखा हुआ था. ठीक है. ही शॉट आउट ऑफ द वाटर आफ्टर ही सॉ द डक. वो पानी में से उसने जो है वो चीख लगाई आफ्टर ही सॉ द डक. डक को देखने के बाद. तो किसके बाद उसने चीख लगाई? आफ्टर ही सॉ द डक. We can say this is a clause because he has been used here. He is a subject, saw is a verb. He put on a show in a lake that has fresh water. वो ये सब कुछ कर रहा था एक ऐसी लेक में जिसमें फ्रेश वाटर था. तो उसने शो कहाँ पुट किया? जैसे हमने देखा था कि ये वेयर, व्हेन, हाउ, वाई का जवाब होगा, तो वेयर का आंसर आ रहा है इन अ लेक दैट हैज़ फ्रेश वाटर. यानी कहाँ पे उसने ये शो किया? एक लेक में, एक झील में, जहाँ में ताज़ा पानी था. लेट्स सी वेयर इज द एडवर्बियल फ्रेज. द एलिगेटर ब्रीच लाइक अ डॉल्फिन. यहाँ पर देखिए एलिगेटर की किस तरह चीख लगाई? तो लाइक अ डॉल्फिन. तो ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है. इन 3 seconds ही शॉट आउट ऑफ द वाटर. 3 सेकेंड्स के अंदर उसने उससे वाटर के अंदर से चीख लगाई. अच्छा, 3 सेकेंड्स कितने टाइम में उसने शॉट आउट किया? 3 सेकेंड्स में. एलिगेटर किस तरह उसने चीख लगाई? डॉल्फिन की तरह. नियर द मिडल ऑफ द लेक ही पुट ऑन अ शो. लेक के बिल्कुल दरमियान के करीब उसने ये शो किया, ये तमाशा किया. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पे उसने तमाशा किया. वेयर का आंसर है नियर द मिडल ऑफ द लेक. तो ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज. एडवर्बियल फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. जबकि एडवर्बियल क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब था, जो हमने पीछे देखा एग्जाम्पल में. विद हिज आर्म्स एट हिज साइड, आफ्टर ही सॉ द डक, एंड अ लेक दैट हैज़ फ्रेश वाटर. तो दैट हमारा इस्तेमाल हुआ हुआ है. ठीक है. सो लेट अस सी थर्ड एग्जाम्पल, नॉमिनल क्लॉज. नॉमिनल क्लॉज like a noun, a nominal clause names a person, place, thing or idea. एक नाउन की तरह नॉमिनल क्लॉज जो है किसी एक शख्स का नाम होता है, नाम दिया जाता है, प्लेस जगह का, थिंग चीज़ का, या आइडिया का. नॉमिनल क्लॉज में फंक्शन इन अ सेंटेंस एज एनी ऑफ द फॉलोइंग. सो नॉमिनल क्लॉज may work as subject, subject complement, appositive, object of a preposition, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा? नॉमिनल क्लॉज या सब्जेक्ट होगा, या पॉजिटिव, या ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
Let's see examples. During Halloween, you can dress like whomever you want. Halloween में आप ड्रेस कर सकते हैं like whomever you want. Whomever you want यहाँ पर nominal clause है, क्योंकि ये नाउन को रेफर कर रहा है कि जिस तरह से भी आप जो ड्रेस अप होना चाहते हैं हेलोवीन पे. दे आर्ग्यू अबाउट हाउ दे विल पे द बिल. वो दोनों जो है झगड़ा करते रहे, बहस करते रहे कि वो कैसे बिल को पे करेंगे. नॉमिनल क्लॉज है, किस चीज़ के बारे में वो करते रहे. नेम आ रहा है कि वो बिल के बारे में. हाउ दे विल पे द बिल नॉमिनल क्लॉज है. आई डोंट नो हु स्टोल माई ग्रिल. मुझे नहीं मालूम कि किसने मेरी ग्रिल चुराई. तो हु स्टोल माई ग्रिल यहाँ पे नॉमिनल क्लॉज है. यानी जो नाउन यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हुए हैं या प्रोनाउन यूज़ हुए हैं उनको नेम करने के लिए कि किस तरीके से ये काम हुआ है या नाउन ने वो काम किया है. सो दैट वाज ऑल अबाउट 3 kinds of clauses: nominal clause, adjectival clause, adverbial clause, and phrases. I hope that you will have understood them. Okay, see you next time. Allah Hafiz.